sisters, Dhamma brothers and sisters who wants to give any donation toward this function, see Mr. Virdi ji, Bakshi Virdi ji here. They can come and see. And now nearly we are coming to end this dana now. So now the offering of dana is nearly finished. We are waiting for Bhante ji to get fresh, and after that we will request them to give us a blessing. We are going to start with Chivar dana. So first dana is given by Ramla from Bedford. So thank you very much. Please be silent. Next one is Ramesh Clare ji. Next one ji, Ganpat Ratu ji. And this one? You have? Vijay Putran and mom. Thank you. Mrs. Gautam Chakravarti ji. Rekha ji. Swatin Moro ji. Mrs. Gaware ji. Mr. and Mrs. Gaware ji. Sujata ji. Thank you. Hamare solicitor sahab. Thank you. Very nice of you. Dees Jassal ji from Wolverhampton. Please keep moving forward. Rani Ramtek ji. Vipassana teacher ji हैं हमारे, बहुत nice. Thank you very much. So Mr. and Mrs. Sujit Virdi ji and Bakshi Virdi ji. अब इधर से जा सकते हैं, इधर से जा सकते हैं। I think start from that end. Yeah. इधर से इधर कैमरा नहीं घुमना, इधर से शुरू कर दो। Yeah, start from here. Yeah. So. Dilip. Mr. and Mrs. Dilip ji. Yeah. Thank you very much. Next one, please. नाम बोल दो, आप ही बोल दो नाम। Wale Nagdev ji. Thank you. Chief Managers, Bank of Baroda. We are very happy to see them here. So he will be the next one, please. प्रवीण करोना जी, Mr. and Mrs. Mr. and Mrs. Praveen Krona ji. बता दो नाम। प्रदीप जगताप, Pradeep जगताप और प्रकाश from India. Okay, from India, Pradeep Jagtap and Prakash ji from India. Thank you very much. You're most welcome. Mrs. Madhuri Hirekar ji, the Mrs. of the founder member of our society. Thank you. And Under Secretary of Buddhist Society, Indian Buddhist Society, first one. And now Mr. Rahul Gindaji from Glasgow. Satish Nayakwati, please. I think this is the last Chivravin thing. Is anybody left? After this, is okay? Okay, the last one is our cameraman, Ravinder Mahdi ji. थाई टेम्पल के हेड बंद कम इधर देना, इधर देना थाई टेम्पल।
So now it's going to the head monk of Thailand, Bihara, more senior. So he couldn't come on behalf of the senior monk, so they have collected on the Bihara. Thank you. So now we will request, we welcome all the Bhantejis from various countries. We are very happy to see you all there and with the players. So we are very happy to offer you dana, which thank you very much. I hope that you all enjoyed it. And now we'll ask you to give us a panchil and 3 shakar, please. Thank you. So we must know that this is all recording by Kanchi TV. So we are very thankful to Kanchi TV also that the whole team is here and they are recording on behalf of Kanchi TV. So this recording is going to nearly over 200 countries. So people will be able to see us, whatever we're doing here in the house of Dr. B.R. Ambedkar. So we are very happy. So if anybody is willing to give any extra dana from yourself, they can come and collect the envelopes from here. So now the Sister Rekha is going to give a dana to each and every Bhanteji. Thank you. And I must remind you again, anybody is willing to, pay or, to somebody want to contribute any donation, they can come, Mr. Bakshi Birdi ji. So we will be very thankful, all the society will be very thankful. He's right on the back. Please raise your hand. Thank you very much. So we are very thankful to our Indian team who have managed to get all the achievers from India, which you know that, so nothing comes free in this world. So, and our manager is here from Bank of Baroda. Please, Prakash Ravi Rao, Assistant Director of Town Planning, India, Bombay. And Pradeep Jagtap, Chief Editor of Lughra Times and General Secretary of Muslim Foundation. So we are thankful to them. These are the gentlemen who brought the achievers here and all the things printed in India and brought us to us. We are very thankful to them. Thank you very much. I hope that they will carry on helping us in the future as well. Okay, now all the achiever dana and all the donations given to the Bhanteji has finished now. Now we will request, we will welcome all the Bhanteji again. So thank you very much for coming to this special occasion. Now we will request you to give us a panchil and 3 shar. Please, thank you. श्रद्धालु भाइयों बहनों, सब लोग खड़े हो जाए कुछ समय के लिए। प्लीज हाथ जोड़कर प्लीज खड़े हो जाएं। अपने स्थान से खड़े होकर 3 बार नमस्कार पाठ बोले पंचदेव जाते। पेज 2 पर है, देख लीजिए। पेज 2 पर लिखा हुआ है। बोलिए नमस्कार पाठ 3 बार। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। कैसे हम बोलेगा आप बोलिए।
बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वैरमणि सिक्खापदं समादियामि पाणातिपाता वैरमणि सिक्खापदं समादयामि अदिन्नादान वैरमणि सिक्खापदं समादियामि अदिन्नादान वैरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिथ्याचारा वैरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिथ्याचारा वैरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वैरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वैरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरे मध्यभमादठाना वैरमणि सिक्खापदं समादियामि सुरामेरे मध्यपमादधाना वैरमणि सिक्खापदं समादयामि साधु साधु साधु। अच्छा ठीक है, जो जो व्यक्ति खड़े होकर नहीं रह सकता कृपया अपने अपने आसन पर बैठ जाए। कृपया बैठ जाए। हम लोग बात करेंगे उसके बाद जैसे रूप भाषण से सबसे करेंगे। नमो तस्से भगवतो सम्मा सम्बुद्धास्से नमो तस्से भगवतो सम्मा सम्बुद्धास्से नमो तस्से भगवतो सम्मा सम्बुद्धास्से इतिविदो भगवान् सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण सम्पन्नो सुगतो लोकविदुरमुत्तरो विद्यामसारथि सत्ता देव मनुस्सानं बुद्धो भगवान् स्वाभावो भगवान् संदिग्धो कालिको देवशिको कालिको कर्तव्येन परिपन्नो भगवतो
नीतियो विभाज्यन्तो सापरोगो विनाशतो माते भवन्तरायो सुखी दीर्घायुको भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वभूतानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। Bhante lived in Bodh Gaya, the most enlightened place of Tathagat Buddha, and we are so happy. The Venerable Bhante from Sri Lanka, but he speaks fluent Hindi as well, and Bhante managed to come here, Venerable Bimala Bhante. And most Venerable Dr. Kashyapa Bhante is here as well from Birmingham, and he's about his project. Bhante has come all the way from Birmingham, and right from the beginning, at the time of centenary, the most Venerable Bhante was very helpful to us. And there's a very massive project is coming up in Birmingham. And I would very much request all of you to look into that. One of the big monument is going to be. So please look into that. And for that reason, meet Brother B. Jassal, some of the announcement how we can help Bhante. Now, we have among us from our Thai temple, one of the biggest one, and one of the most Venerable Bhante, 86-year-old, but due to his health, he couldn't cover up with his age. Nice to see you everyone today. Arun, we came, 2 of us right now, and we came from Thailand, from the Buddha Madipat temple in Wimbledon. One of the most beautiful temple from the Royal Thailand family, and the Bhante is here. And Rekha, you wanted to give a donation further, you can give it, pass it on to for the most senior Bhante. Bhante, your name? Ruth. Bhante, your name? From the Thai temple. Thai temple, Wimbledon. Welcome, Bhante. Bhante from Amravati Bhante from here. Yes. Bhante, your good name? Jnana Darsana. I am Darsana, yes. Originally from Bhante. From Russia. Russian Czech. Oh, from Russia. Bhante is here. And one of the senior monk at the Amravati. Bhante. Bhante Tejon from Wolverhampton. And originally from Kushinagar. From Kushinagar. Kushinagar. We have a Kushinagar here and we have a Bodh Gaya here. Sarnath rejects. Bhante. Oh, Bhante from Gujarat है. लेकिन अमरावती से आते हैं. Nice, thank you, welcome Bhante. Good name Bhante. संत मनाओ, very nice, welcome Bhante. Bhante. मेरा नाम बंते Bhante from Sri Lanka. And the temple name Bhante? Lechwat Buddhi. Russia and My pathway France. Mahathar temple from Kimberley. Welcome. Very nice. I am so happy to introduce Venerable Abhispanna Bhante, who is very connected with our movement. And the Bhante have dedicated his own life, and he is very instrumental for LSC, where we had the first portrait at the LSC by Bhante in 1973. Bhante, yes, Bhante. I'm Bhante Sarno from Wolverhampton, Bulgaria. Welcome, Bhante. From Bhante. Amravati, welcome, Bhante. Welcome, Bhante. Welcome, Bhante. Oh, from Sadar Isai International. But Nepal. And from Nepal.
where the Tathagat was born. We are very happy, Bhante. Welcome, welcome, Bhante. I'm Panasa, I'm the Limabris Center family. Burma. I'm Udra. I'm Chima of Sasanarati Nyama Buddhist Center. I'm also a Buddhist chaplain in Kaisei Tuma Hospital. I'm living here for nearly 30 years. I met and you also. So thank you very much for all of you. Most Honorable Bhante, and Bhante one of the very senior one, and Bhante knows in fact Bhante Ravit Dhamma as well. We are very happy. Welcome, Bhante. I'm Venerable Sri Dhamma from Thames Buddhist Vihara, Croydon. Welcome, Bhante. With the permission of Chair, today is a very happy occasion. 1921, 1922, our Master and Savior, Dr. Babasaheb Ambedkar was staying upstairs on this room right on the top. And we see from the writing that Ramu, my wife, he used to write. There's a lot of noise going through and I can't really write too long and I'm tired. Our Master and Savior, Bodhisattva Babasaheb Ambedkar lived here, and today in this very house we are offering dana from various countries. This is the season where the 1800 million Buddhist people all over the world celebrating Buddha's birth, enlightenment and passing away 2562 years ago in Nepal, today India. So while 1800 million Buddhist people worldwide celebrating these important thrice events, Buddha's life, here, as I mentioned, Dr. Ambedkar and Buddhist organization, they are celebrating late Dr. Ambedkar's work and mission, who worked hard, fought against the caste system in India about 100 years ago. That is why we all are here celebrating his life. Because this is the place where he studied well. In Buddhist scriptures it is said, Sukho Buddhanang Upphado, Sukho Saddhamma Desana, Sukha Sanghasa Samaggi Samagganam Tapo Sukho. The birth of enlightened one brings us happiness. Following his teaching brings us happiness. Collectively working brings us happiness. Following the Buddha's path brings us happiness. Time to time in this world, knowledgeable people come and go. As I mentioned 2562 years ago, the most important, best knowledgeable person, so-called Buddha the Gautama, appeared in this world and passed away, and he given us marvelous teaching where we are following, as I mentioned, more than 1800 million Buddhist people in this world. So, wish you all the best by the power of Buddha, Dhamma and Sangha. Sadhu, sadhu, sadhu. Most Venerable Vimala Bhikkhu Bhante will say, श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं, पूज्य विश्व महासंघ, हमें भी बहुत खुशी की बात है आज इस अवसर पर कुछ एक शब्द बोलने के लिए मौका मिल गया। अंतर्राष्ट्रीय भिक्षु संघ यहाँ बैठे हुए, अब कुछ मिनट के पहले बोलने लगा, रशिया से, इंग्लैंड से, बर्मा से, थाईलैंड से, श्रीलंका से, सभी जगहों से भंते लोग एकत्रित हुए।
आज का दिन इस महीना विशेष रूप से इसको बोलता है वैशाखी। उत्तरी भारत में वैशाखी उत्सव मनाया जाता है सब जगह, और महाराष्ट्र आदि जगहों में भी वैशाखी का उत्सव बहुत मनाया जाता है। बुद्ध के टाइम में भी एक राजगीर में बहुत बड़ा मेला होती थी, इसको बोलता था गिरग समझ है। वो जैसे नाच गान इत्यादि ये सब जो करता था, इसको बोलता था कि मूर्खों का मेला है, क्योंकि खा पी के नाच जो समय बिताता, समय बर्बाद करता था, कुछ काम नहीं आता। लेकिन साल में एक बार ऐसा उन लोगों को आनंद पाने के लिए एक मौका बना हुआ था। इस जगह ये बहुत ऐतिहासिक जगह है। डॉक्टर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी अपने उस समय जब छात्र थे, विश्वविद्यालय में जब पढ़ाई करते थे, उस समय उन्होंने इस घर पर मकान में ऊपर के रूम में रहते थे। तो उसी में रहकर उन्होंने सारे संसार का नाम कमाया हुआ बहुत बड़ा विद्वान के रूप में। तो उनका आराम से वर्षगांठ मान करके 21 लोगों को यहाँ पर निमंत्रित से बुलाकर उन लोगों को भोजन दान करवाया। सर्वप्रथम तथागत बुद्ध को अपने तैयार किया हुआ भोजनों का प्रथम हम लोगों को अर्पण कर दिया। तथागत बुद्ध का धर्म पर उन्होंने सारे धर्मों को पढ़ाई की, सभी धर्मों का पढ़ाई करते अंत में उन्होंने निर्णय किया कि यही एक धर्म है, साधारण जनता को एक समाज से दबे हुए लोगों को अच्छे रास्ता पाने के लिए यही एक ही रास्ता है, एक ही मात्र एक रास्ता है जो इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने लगा। तमाम पुस्तकें लिख करके सारे संसार में उन्होंने नाम भी कमा लिया। जैसे आपने बताया था कि कृष्ण बनते ने बोलने लगे, सुखा असंग सामग्री उन्होंने कह दिया, यही तो सबसे बड़ी बात है। सभी विचलों को भी करता करके उन लोगों को आदर सम्मान। आप सब लोग मिलकर के आज बहुत बड़ा पुण्य की उच्चतम कार्य कर रहे हैं। ये पुण्य की कार्य है। उनको अब हम लोग एक महाराष्ट्र जैसे जगहों में डॉक्टर अम्बेडकर जी को देवता के रूप में मानते हैं। कितने मुश्किल से उन्होंने पढ़ाई किया था, बहुत मुश्किल से, बहुत कठिनाइयों से करते पढ़ाई करके अपने समाज को ये कष्टों से दूर होने के लिए उन्होंने बहुत रास्ता बना दिया। उन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन राइटर के नाम में इतिहास में उनका नाम है। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वाले ये महान विद्वानों का एक व्यक्ति, मुख्य व्यक्ति डॉक्टर अम्बेडकर थे। तो उनके नाम से इस मकान को महाराष्ट्र गवर्नमेंट से खरीद कर एक म्यूजियम के रूप में रखने के लिए उन लोगों ने बंद किया था। इस पर हम लोग उन लोगों को महाराष्ट्र सरकार को बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। और इस कमेटी में जो है सदस्य, सभी सदस्यों को बुद्ध धर्म संघ रत्न का आशीर्वाद। समय का पाबंदी के कारण मैं इससे ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। बुद्ध धर्म संघ का तिरत्न का आशीर्वाद सभी भोजों को। आप लोग सब आनंद रहें और खुशी रहें, सुखी रहें, मजे में रहें। सबको बुद्ध का आशीर्वाद है। बहुत सब मंगलान रत्न सब विधान भावे, सब धम्मान भावे, सब संघान भावे, सदा साध साध साध। बहुत ही अच्छा और प्रसन्न समय है हमारे लिए, बहुत ही खुशी का। और बंते जी ने बोल दिया, अभी हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे। हम लोग अभी जो है सभी को थोड़ी हाउस कीपिंग के बारे में बता देते हैं कि यहाँ जो है
तथागत के साथ भिक्षु लोगों का, भिक्षु भंतेगण का पहले फोटो होगा। उसके बाद में ऐसे ही जैसे हमारे पास कोई ऐसे फोटो है जो पुराना, आज से कोई 27 साल पहले का, वो आपको देखने का मिलेगा ओरिजिनल फोटो। उसमें से कई लोग इधर हाजिर भी है, तो वो भी आगे भी हमने फोटो लेना है यादगार। आज का भिक्षु लोग के साथ पहले बनते भिक्षु संघगण जो है वो रहेंगे पहले, इधर भी होगा। इस तरह से आप सबका भी इधर फोटोग्राफी होगी। और उसके साथ साथ में अभी ज़्यादा समय नहीं लेते हुए यहाँ भिक्षु को हम बनते को रिक्वेस्ट करेंगे कि कुछ हमारे जो खास लोग हैं जिसने बहुत काम किया है उसको हम ऑनर करना चाहते हैं। हमारे वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर रामपाल राही, वहाँ से शुरू करते हैं। रामपाल राही जी को बनते जी ऑनर करेंगे। मिला जी। We have among us Kasi TV trustee Ramesh Clergy, who has been working great deal of work. We have Dev Mahemiji, one who is doing a marvelous work and all the time doing a voluntary service. Mr. Dev Mahemiji, please come forward. Our treasurer of Federation of Ambedkarites and Buddhist Organizations are not among us today. He is in India, Mr. Sonlal Sastri, but his son, lawyer and a very energetic. Sonlal Ginda, sorry. Mr. Rahul Ginda is among us here, and he will accept the present on behalf of his father. आइए राहुल जी। Rahul. Thank you. We have a very senior member among us, Mrs. Hirekar, who was at the present at the 14th of October 1956 at with the Baba Sahib, and we are going to honor Mrs. Madhuri Hirekar, who was the first Indian. Mrs. Hirekar was the first General Secretary of Indian Buddhist Society, and they've been here since 16. And she was a lawyer, and her husband, Mr. V.T. Hirekar, great service and to doing to us. We want to honor our Venerable Bhante Abhispanno, who has been doing a great service to us for many years, and he dedicated his life for the mission of Baba Sahib Ambedkar. Abhispanno Bhante, great instrumental for movement and doing a great work. I got the pleasure of coming to you. There you go, Bhante ji. Bhante ji उधर भी देखिए, थोड़ा picture में भी आ जाएगा. H.L. Virdi, he is not here somehow. On his behalf, Mr. Bakshi Virdi will take the present. Mr. H.L. Virdi. Sangmitra Lankar, the president of Dr. Ambedkar Memorial Trust, she is not here today, but Rekha will accept on behalf of Sangmitra. Rekha, Mrs. Dhamma Gautam, they are all busy in the housekeeping duty. So anyway, Kasia, all the way from Poland, she will accept on behalf of Sangmitra. Kasia. Kasia, Karuna, all the way from Poland, she will accept on behalf of Sangmitra. Last one is the award for Pradeep Jagtap, who has been great helpful for us doing our work,
and brought all the achiever, both of these brothers from all the way from India. We are going to honor Prakash Ravi Rao ji. Prakash Ravi Rao ji. Prakash Ravi Rao. Prakash Ravi Rao, Advisor, International Buddhist Peace Organization. Last one is Prakash Ravi Rao. Pradeep Jagtap, President, International Buddhist Peace Organization. Okay. This way, sir. Thank you very much for your patience. And your Okay. Abhivadana Dhirisa Nityam Vajravacharino Yattaro Dhamma Vartanti Ayuvarno Sudam Varam Ayuvaro Samprati Saka Samprati Nivacharo Nishwana Samprati Minami Samanityatu. Honorable member of the Bhikkhu Sangha to come over here. We want to take one picture. Let us on. Yeah, there's a little request here. If anybody is going to East Ham side, one of our Banteji want to, just take the lift. Please help them to take it. Otherwise, Banteji, they're going to Birmingham. It's going to be long way around for them. Please come forward if somebody can help to take our one of Banteji to East Ham. And again, I would like to thank you again very much. इस प्लेयर टू जो भी आज हमने किया है वो फैबो के फ्लैग ये किया है फेडरेशन ऑफ अम्बेडकर एंड बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एज यू नो दैट के आवर प्रेसिडेंट शी इज आउट ऑफ कंट्री एंड आई हैव टू डू हर प्लेस सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन थैंक यू फ्रॉम द फैबो ऑल द एंटायर टीम एंड एवरीबॉडी कमिंग फ्रॉम फार एंड नियर थैंक यू एंड Banteji अगेन थैंक यू वेरी मच जय भीम नमो बुद्धाय. Thank you so much. Singular photo on the steps. Fantastic. Everyone. All honorable. ਅੱਜ ਅਸੀਂ 10 ਹੈਨਰੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਕੱਤਰਤ ਹੋਏ ਹਾਂ. ਇੱਥੇ ਅੱਜ 21 ਬੰਤੇ ਜੋ ਵਰਲਡ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਇਆ ਅੱਜ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ ਆ ਅਤੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਲਈਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ. ਅਤੇ ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 10 ਹੈਨਰੀ ਕਿੰਗ ਹੈਨਰੀਜ਼ ਰੋਡ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ. ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ. ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੰਤੇ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ. ਅਤੇ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅੱਜ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ 'ਤੇ 775 ਚੈਨਲ ਸਕਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ 200 ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਧੰਨਵਾਦ. ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ ਨਮੋ ਬੁੱਧਾ.